Hello dear students. So it is a pleasure to meet you after a long distance or after a long time. Hope you are well at your house and you please stay at home and stay healthy, because there is a crucial time is running in the country. So please be safe. So starting for you, the video lecture will start from the very first chapter of the second year, that is Reproduction in Organisms. We will start with Reproduction in Organisms. So my suggestion to you that while watching this video lecture, you should be prepared. You should be prepared along with your NCERT book, because I will teach you the chapter in collaboration with the NCERT points. So I will tell you the diagrams and the points of the NCERT with reference to the page number. So be ready with your NCERT book. So reproduction in organisms, all of you know that reproduction is the biological process in which the parents produce next generations similar to itself. So the reproduction in other way, reproduction is a biological process in which offsprings or individuals are produced which are similar to parents. It is a biological process in which individuals, or we can call that the next generations, are produced which are similar to parents. So here the word is written similar to parents, not exactly identical to parents, because they may be identical, they may not be identical. In asexual reproduction, that the individuals are genetically identical, they are clones, but in sexual reproduction variations takes place, so they are called offsprings, and they are not genetically identical among themselves and also with the parent. But the common point is for asexual and sexual, the individuals producing the next generations are similar to parents. That means जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेगा तो ह्यूमन की बच्चा होगा, इसका मतलब हाथी का बच्चा नहीं होगा। हाथी अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो घोड़े का बच्चा नहीं होगा, तो हाथी जैसे दिखने वाला बच्चा होगा, इसका मतलब वही है, that is similar to parents. And another thing you know that every individual have a certain lifespan. The lifespan varies from individual to individual, or varies from species to species, or organism to organism. And what is lifespan? It is the period between birth and natural death. Birth and natural death, not accidental death. So now we'll go to the lifespan. So it is the period between birth and natural death. So lifespan is the period between birth and natural death. That is called the lifespan. And every organism has its own lifespan. Every organism has its own lifespan.
Okay. So each and every organism can live for a certain period. सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल नहीं है, सबकी डेथ आएगी, एक ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा. सो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसेक्ट हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, कुछ एक्सेप्शंस उसमें है, मैं उसको बाद में बोलूंगा, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म का, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का डेथ होती है. डेथ इज सर्टेनिटी, डेथ सुनिश्चित है. सो बात फॉर नेचुरल डेथ के बीच में जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन. एंड लाइफ स्पैन वैरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इट वैरीज फ्रॉम varies in different organisms. It varies in different organisms. And the lifespan may be short as a few days or as long as a few thousand years or several thousand years. तो लाइफ स्पैन कुछ एक दिन भी हो सकता है, मतलब कुछ घंटा भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है और कुछ साल भी हो सकता है. मेनी इयर्स भी हो सकते हैं, several thousand years. जैसे पीपल 3000 years, 2000 to 3000 years वो सर्वाइव होता है. सो लाइफ स्पैन में बी few hours, few days, and lifespan may be few hours, few days, and as long as a few thousand years, and as long as few thousand years. Okay. Lifespan of mayfly, एक फ्लाई होता है, is 1 day. Lifespan of mayfly, इसका लाइफस्पैन 1 day होता है. Lifespan of mayfly is 1 day. एक दिन में ही वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है. While giant tortoise is the longest living animal, इसका about 200 years होता है, जो कि giant tortoise है about 200 years. और ये giant tortoise है, ये longest animal में ये longest living animal. This is longest living animal. So आपका एनसीईआरटी में आप देखेंगे पेज नंबर 4 में कुछ डायग्राम दिया है और उसके नीचे में कुछ ब्लैंक भी दिया है और कुछ लाइफ स्पैन भी दिया है. If you follow those points, so एलिफेंट दिया है, उसके बाद रोज दिया है. So diagram in the inside the book, page number 4,
तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना? एलिफेंट का लाइफ स्पैन जो होता है वो 60 to 90 years, 60 to 90 years. जो रोज का है that is 5 to 7 years. You can write in the instructive book below the diagram जो blank जगह है वहां पर आप लिख सकते हैं the lifespan of different organisms. एलिफेंट का 60 to 90 years, रोज प्लांट का 5 to 7 years. नेक्स्ट डायग्राम में डॉग दिया है, डॉग का 20 to 30 years. डॉग का 20 to 30 years. और उसके बाद बटरफ्लाई दिया है और बटरफ्लाई का डाटा ऑलरेडी बुक में दे दिया है. सो इसका कुछ वीक्स होता है, इसे बटरफ्लाई का दिया है 1 to 2 weeks. बटरफ्लाई लिव फॉर 1 to 2 weeks. क्रो का भी डाटा दे दिया है, क्रो लिव्स फॉर 15 years. उसके बाद बनाना ट्री का ब्लैंक छोड़ा है, तो बनाना ट्री lives for 25 years. Okay, so crow for 15 years, banana tree is for 25 years. Crow 15 years and banana tree is for 25 years. You please note it down. After the banana tree, then cow, then parrot. So parrot का दे दिया है, so cow का will write. Cow is 20 to 25 years. So cow. So cow is 20 to 25 years. And parrot का दे दिया है. Data has been given in the instructive book. तो पैरट होता है, उसका था 140 years. और उसके बाद क्रोकोडाइल भी दे दिया है, क्रोकोडाइल है 60 years. ये सब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है. तो क्रोकोडाइल इज फॉर 60 years. उसके बाद हॉर्स में ब्लैंक छोड़ा है, सो हॉर्स ऑल्सो लिव्स फॉर 60 years. Horse is for 60 years. उसके बाद फ्रूट फ्लाई लिखा है, फ्रूट फ्लाई. तो जो डायग्राम दिया है, फ्रूट फ्लाई का डायग्राम दिया है. So fruit fly, all of you know that fruit fly is Drosophila. So fruit fly survive for 30 days. ऑलरेडी इस चैप्टर का कुछ हिस्सा आपका हो गया था क्लासरूम में, लेकिन बीच में शुरू करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू किया हूं और कुछ मॉडिफिकेशन भी किया हूं. जो आपको नोट दिया गया था और अभी जो पढ़ा हो रहे इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, तो उस नोट को छोड़ दीजिए. अभी जो पढ़ाई हो रहा है उसको फॉलो कीजिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, so fruit fly survive for 30 days. Next is the rice plant. Rice plant is for 3 to 4 months. So rice plant survive for 3 to 4 months. Rice plant survive for 3 to 4 months. And tortoise survive for 100 to 150 years.
and tortoise survive for 100 to 150 years. इससे पहले हम डाटा आपको दिए थे कि अबाउट 200 ईयर्स दिए थे जायंट टर्टल्स, तो कुछ टर्टल्स 200 ईयर्स तक भी जाते हैं, लेकिन एवरेजली लाइफ स्पैन है 100 to 150 ईयर्स, 100 to 150 ईयर्स। और जो पैनियन ट्री है, सो पैनियन ट्री सर्वाइव फॉर 200 ईयर्स। बरगद का पेड़, you know that banyan tree, that is Ficus bengalensis, that survive for 200 years. That survive for 200 years. और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं बोल रहा हूं। पीपल ट्री, पीपल ट्री सर्वाइव फॉर 2000 to 3000 years. People tree. Another example भी मैं अभी दे रहा हूँ, sequoia. You know that sequoia is the largest or tallest gymnosperm redwood tree. Sequoia. It is redwood tree. Redwood tree. That survive for 3000 to 4000 years. 3000 to 4000 years. Okay? Please note it down. Okay. So lifespan of an organism includes 4 stages. जब जन्म से नेचुरल डेथ तक, बर्थ से नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है, लाइफ स्पैन या लाइफ पीरियड, उसमें वो 4 स्टेजेस पार करता है। 4 स्टेज, one by one after one, that actually passes 4 stages. So lifespan of an organism includes 4 stages. Lifespan of an organism includes 4 stages. The number 1 stage is juvenility. Number 1 is juvenility. जो चाइल्ड स्टेज होता है, that is known as juvenility. इसका मतलब है रिप्रोडक्शन का पहला जो स्टेज है, that is called juvenile stage. Yeah, it is called as juvenility. तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, ऑर्गेनिजम्स डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोडक्शन कर, जुवेनाइलिटी स्टेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है, उसमें रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी आता है, वो रिप्रोडक्शन वो तैयार होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद है मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। जो मैच्योर स्टेज है उसके बाद इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। रिप्रोडक्शन begins at this stage. Reproduction begins at this stage.
उसके बाद है एजिंग एंड सेनेसेंस। तो रिप्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगा और ग्रेजुअली एज इंक्रीज होगा तो बॉडी का वेयर एंड टियर होगा, तो दैट स्टेज इज नोन एज एजिंग एंड सेनेसेंस। That is known as aging and senescence. So aging क्या है? Aging is progressive deterioration in the body of the organism. Aging is the progressive deterioration या degradation. Aging is the progressive deterioration in the body of organisms. Deterioration in the body of organisms. Okay. The terminal irreversible stage of aging is called senescence. The terminal irreversible stage of aging, irreversible stage of aging is called senescence. The terminal irreversible stage of aging is called senescence. इसका मतलब है जब रिप्रोडक्टिव फेज के बाद या मैच्योरिटी फेज के बाद जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्रोग्रेसिव डिटरेशन होता है या प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एजिंग। और एजिंग होने के बाद जो उसका एजिंग का जो टर्मिनल स्टेज आता है, जो कि बैक नहीं होता है, जो इरिवर्सिबल है, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस। And the last stage of the lifespan, now we are studying the lifespan का 4 स्टेज हम स्टडी कर रहे हैं। तो the last stage है, that is known as death. Death is the last stage of lifespan. Senescence finally leads to death. Senescence finally leads to death. So death actually क्या है? इसमें क्या होता है डेथ में?
It is the final permanent cessation of all vital activities of an organism. It is the मतलब डेथ क्या है? Death is the final permanent cessation मतलब स्टॉपेज. बॉडी का सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देगा तो that organism is declared dead. So it is the final permanent cessation of all vital activities. All vital activities of an organism. All vital activities of an organism. So these are the 4 stages of lifespan. 4 stages of lifespan. ये चारों स्टेज ये one after another ये फेज सब आता है. तो जो ट्रांजिशन होता है या चेंज ओवर होता है जुवेनाइल से मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से एजिंग सेनेसेंस, उसके बाद डेथ, जो चेंज ओवर होता है या ट्रांजिशन होता है दैट इज जेनेटिकल कंट्रोल टू मच एक्सटेंट एंड सम एक्सटेंट आल्सो कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सपोज हमारा जो डाइट है किस टाइप का डाइट हम ले रहे हैं. अगर हम ज्यादा अच्छा वाला डाइट नहीं लेंगे, हमारा अगर माल न्यूट्रिशन होगा तो एजिंग स्पीड अप हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगा. तो हम किस जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में है, उसमें टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल ऑल दीज स्टेजेस. सो जो चेंज ओवर होता है या जो ट्रांजिशन होता है, चेंज ओवर मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. यहाँ पर एक स्टार्ट देके पॉइंट आप लिख सकते हैं, चेंज ओवर या ट्रांजिशन. चेंज ओवर और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. Change over or transition from one stage to another is determined by genetic and environmental factors. Is determined by genetic and environmental factors. इसमें बॉडी का फैक्टर जो है इंटरनल फैक्टर वो जेनेटिकल फैक्टर होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर होता है. ये सब फैक्टर कंट्रोल करता है लाइफ स्पैन की जो 4 स्टेज है उसका ट्रांजिशन को वो कंट्रोल करता है.